हाय स्टूडेंट्स आशा करछि हमने समस्त बहुत भले थी। सो आज आम गोटे ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स गोटे सॉल्व करिया। सो क्वेश्चन होची ए ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड 100 kVA at full load. Its copper loss is 1200 watt and its iron loss is 960 watt. First bit रे दीजिए calculate the efficiency at full load at unity power factor. Second bit रे efficiency at half full load at 0.8 lagging power factor. Third bit रे load kVA at which maximum efficiency will occur. So efficiency related problems को केमती सॉल्व करिया देखो। फर्स्ट गिवन डाटा कौन देछि फुल लोड रेटिंग equal to 100 kVA, okay, and full load copper loss equal to 1200 watt and full load iron loss equal to 960 watt. Copper loss symbol PCU and iron loss symbol PI. Okay, now first bit solve करिया। Calculate efficiency at full load at unity power factor. You know what is the output power? VI cos phi. For unity power factor, this cos phi equal to 1 and this VI rating is given 100 kVA. So what will be the output power? 100 into 1, that is 100 kilowatt. So efficiency at full load formula कौन? Output power divided by input power, or you can say output power divided by output power plus losses, that is equal to output power होची 100 kilowatt divided by 100 plus a 1200 watt को kilowatt रे कन्वर्ट करो, that will be 1.2 1.2 kilowatt and this 960 watt को kilowatt रे कन्वर्ट कले 0.96 kilowatt divided by 1000 करियो काहेकि ना बिकॉज दिस इज इन 100 किलोवाट यूनिट है। सो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लॉसेस कौन कौन आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। आयरन लॉस है 0.96 किलोवाट, कॉपर लॉस है 1.2 किलोवाट, दैट इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.96 इंटू 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रे बाहर करने दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 100 plus 1.2 plus 0.96 into 100. This will be 97.88%. This is the efficiency at full load. ये first bit. Then second bit. Second bit पचाची efficiency at half full load at 0.8 lagging power factor. At half full load means कौन ना फुल लोड रे जदि करेंट फ्लो होची आई, हाफ फुल लोड रे तार अधा करेंट फ्लो, दैट इज आई बाई 2, देन पी आउटपुट विल बी व्हाट वी आई बाई 2 cos phi, और आई कैन राइट हाफ वी आई cos phi. See here cos phi power factor is given 0.8 lagging power factor, so half already vi रा वैल्यू यू नो, vi रा वैल्यू होची 100 into 0.8, that is equal to कहते हैं आई थिंक 40. yes 40 kilowatt. okay, and second thing here आयरन लॉस तो लोड ऊपर लोड करेंट ऊपर डिपेंड करनी. आयरन लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करेंट ओनली. कॉपर लॉस PCU इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर टाइम्स लोड करेंट. जदि लोड करेंट तुम हाफ हो देन कॉपर लॉस कौन हम 1/4 टाइम्स डिक्रीज हम, दैट इज PCU at half
full load equal to 1/4 copper loss at full load, right? That will be what? 1/4 into full load copper loss. Full load copper loss कहते हैं क्वेश्चन में 1200 वाट, दैट इज 300 वाट. एक किलोवाट कन्वर्ट कले 0.3 किलोवाट. आयरन लॉस सेम रहेगा, दैट इज 0.96. सो एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड इक्वल टू आउटपुट एट हाफ फुल लोड कहते 40 किलोवाट डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.3 copper loss plus 0.96 iron loss, that is equal to 40 divided by 40 plus 0.3 plus 0.96 into 100 in terms of percentage point, that is equal to 96.94%. Okay, this is second bit. Third bit already तुम क्लास रे डिराइव कर है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी? दैट विल बी if maximum efficiency occurs at x percentage of load, x percentage of full load, then total iron loss will be equal to x square into PCU. Okay, that implies yes, this x percent केते percentage load होची केते percentage load maximum efficiency होची, that is x. से x को केमती बाहर करियो, x equal to केते हो इटू PI divided by PCU रो root over. Already full load copper loss and iron loss already given, that is 960 divided by 1200 root over, that is equal to केते 960 divided by 1200 root over 0.89, or you can say at 89% of full load maximum efficiency occurs. Okay, so जदि फुल लोड रे तुमर केवीए रेटिंग है 100 केवीए, 89% लोड रे केवीए रेटिंग केते हबो? फुल लोड रे केवीए होची 100 केवीए at 0.89 लोड केवीए केते हबो? 0.89 into 100, that is 89 kVA. So this is the load of transformer, load in kVA at maximum efficiency condition. Okay, so this is all about the problem related to efficiency of transformer. Thank you.